Dear students, good afternoon. As you remember, in the previous class, we discussed about some activities, some tests, which focus to amino acids. Yeah, but today we will be discuss about to test two proteins in general. Yeah, as you see in the screen, when we're talking about Biruet reaction, we must to remember that it's specific reaction to proteins. Why? Because this reaction will pass to with peptidic bond of the proteins. As you see in the reaction, for this reaction we need peptides and some compound proteins, some compound with peptidic bonds, yeah, and ions of copper. Copper must be with valency 2, because valency 1 of copper will not participate in this reaction. And usually we will use copper sulfide, and copper sulfide will have a blue color solution. Blue color solution give us chance to see change of the color. If reaction will be positive, it will positive. If we can see reaction in this situation in when we added copper ions to solution with the proteins, with the peptidic bonds, we can see deep purple or purple color. It will be color. It will colored product. Specific colored product. It's by peptide copper complex will have this color. Okay. Okay, let's see what's mean peptidic bonds. I think you know what's mean. You remember, because in the previous class we discussed about, in the lecture we discussed about these points, and as you see in the screen, when we're talking about reaction between two amino acids, one amino acid will be reacted by carboxyl group and second amino acids will be reacted by nitro group. And during this reaction, we can see specific result. Water will be released and peptidic bond will created between two amino acids. Yeah, and after creation of peptidic bonds, density of electrons will be a little bit removed from the oxygen to nitrogen, and it gives us possibility to see specific negatively charged parts of the peptidic bond. If you see in the nitrogen, we can see two dots up, yeah, of the nitrogen or down of the nitrogen. These two dots show us that here we can see negatively charged polus. It will be easily to organize the linkages between positively charged copper with a negatively charged component of proteins, of peptidic bonds. Yeah. Next important, very important point, which can be linked with this reaction, with the organized of reaction by Biruet test, it will be specific alkali environment. We must to edit base, we must to edit strong base, for example, potassium hydroxide in the from 10 to 40% of potassium hydroxide in the water solution for see this reaction without change based from the acid, for example, to base environment. Reaction will be not available. This reaction not will pass. And sodium, for example, ions of the sodium will also participate in the create this
purple colored complex. Yeah, I think it's understandable. Okay, and what's the difference between color? I think you see reason different, because if we're talking about copper sulfide, it will be just blue colored solution. If you're talking about solution with the proteins inside, and with the copper sulfide will change color from the blue to purple, and change it color from the blue to purple show us positive reaction of Biruet test. I think it's just a repeat. You can see this example, that if we can see after experiment, if we can see just a blue color, it will be negative reaction, negative Biruet reaction. If we can see, for example, purple color, it will be positive reaction. Deep purple or purple color show us positive reaction. It will be important for recognizing of amino acids, of proteins in the solution. But be very careful. Some amino acids, like a histidine, will pass. This make positive, give us positive result of Biruet test without peptidic bonds. You must remember about it. Okay, I think it's understandable for more understandable this topic. I recommend to look through some videos for you. It will be, some videos will be repeated, but you must focus for some specific, because in the some video we can see some different specific. Yeah, let's start. And I want to emphasize that this information and this video will be available also for in the your Moodle platform, because for some students it will be very important if your colleague lose possibility to join us, they can connect with this topic by in the Moodle platform. Yeah, please not forget about it, and inform your colleague for, or if it's interesting for you to, for example, look through again some points, it's give you chance to repeat these topics by in the Moodle platform. Okay. You must see the first. You must see some specific online apps which give you chance to use some information from to your mobile phone, to your cell phone for Android, for your devices. Yeah, and also please come here to topic of protein, topic 3. And you can see the first online lab here. It's some additional sources for you if it's necessary for you to see some reaction for identification of proteins, amino acids in the proteins. It will be available here. But today we will focus for the Biruet reaction. Let's start to see. Aim: to detect the presence of proteins by Biruet test. 2 ml of protein solution, that is, milk, NaOH solution. Aim: to detect the presence of proteins by Biruet test. Step 1.
Take 2 ml of protein solution, that is, milk or albumin of egg, in a test tube. Step 2. Add 1 ml of 40% NaOH solution. Step 3. Add 2 drops of 1% CuSO4 solution. Step 4. A violet color indicates the presence of proteins. Okay. This one also will be necessary for you. Egg white contains a lot of protein. The test for protein is called the Biruet test. This involves adding some sodium hydroxide solution, then running some very dilute copper sulfate solution down the side of the tube. At the top of the mixture, the colour change to mauve shows that protein is present. So which of these will test positive for protein? Bread in tube 1, nuts in 2, and grape juice in 3. Both the bread and nuts contain protein. Which contains more? Good. And I recommend to look through this one. Experiment 106. The Biruet test for proteins. The Biruet test is an analytical procedure to identify soluble proteins in solutions. To perform this test, we need a protein solution, sodium hydroxide 10%, and a diluted solution of copper sulfate. Watch how a 10% solution of sodium hydroxide can be prepared. As this base is conditioned as pellets, it's very difficult to weigh a fixed amount due to the pellet's lack of uniformity. After a certain mass is weighed, add distilled water until you reach 10 times the mass of the weighed base. So, you get a 10% solution of natrium hydroxide. Handle carefully the sodium hydroxide as it is very caustic. When preparing the copper sulfate solution, take in account its crystal water content. Weighed 0.78 grams of copper sulfate pentahydrate to have 0.5 gram of salt dissolved in 50 gram of solution. Separate in 2 beakers an egg yolk of its white. Dilute both with water to make protein solutions. Stir them to ensure homogenization. Filter both mixtures.
You may envisage the preparation of a protein solution from bread. Another soluble protein you might analyze is a solution of gelatin. Milk is also suitable for the Biruet test as it contains casein, a water-soluble protein. To test the presence of a protein, take in a test tube 3 ml of a sample solution. Add the same amount of the 10% sodium hydroxide solution. Add a few drops of the 1% copper sulfate solution. Shake it to homogenize the mixture. If a violet color is seen, this is an indication that the analyzed solution contains a soluble protein. Repeat the procedure with egg yolk solution. The violet color is seen even if the sample is yellow. Milk also gives a positive reaction for the Biruet test. Gelatin is also obviously reacting as a color change is observed. The violet color is due to the formation of a square planar copper complex with the amino groups involved in the peptide bonds, the complex being called Biruet. As the solutions contain copper, it is advisable to discard them in container used to collect
less toxic inorganic waste. Okay. I think some students want to paint a little bit, yes? Okay, next video, which will be necessary to focus now. This one, I think. This one. Will be connected with the Urdu language. You can see some details about, Hindi language. We can see some details of Biruet test in the Hindi. Let's start. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री विद डॉक्टर पीके प्रभाकर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टेस्ट है, दैट इज बायूरेट टेस्ट उसको हम बोलते हैं। और ये टेस्ट हम करते हैं नॉर्मली प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के डिटेक्शन के लिए। प्रोटीन और पेप्टाइड कहने का मतलब कि जहाँ भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा उसके लिए हम बायूरेट टेस्ट करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन कुछ नहीं है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबा सा चेन बनाते हैं, जिसमें जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, और उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? तो ये हमारा एक एमिनो एसिड है, जिस एमिनो एसिड्स में हमारा एक COH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है। तो पेप्टाइड्स बॉन्ड बनाने के लिए एक एमिनो एसिड्स का COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाइंड करता है, बॉन्ड बनाता है दूसरे एमिनो एसिड्स के NH2 ग्रुप के साथ विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, सो इट इज ए डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन यू कैन कॉल इट, और दोनों जुड़ जाते हैं तो कंडेंसेशन। सो इट इज ए काइंड ऑफ कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड इज ए पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाता है दो अमीनो एसिड के बीच में। सो दिस पोर्शन इज पार्ट ऑफ वन अमीनो एसिड एंड दिस इज पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। सो दोनों अमीनो एसिड जुड़े होते हैं एक बॉन्ड से, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये रिएक्शन जो है वो डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब बायूरेट टेस्ट होता क्या है? इस बायूरेट टेस्ट का अल्टरनेट नेम है, एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोवस्की टेस्ट। ये टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अगर अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ तभी ये टेस्ट पॉजिटिव रिएक्शन देता है, अदरवाइज ये टेस्ट नेगेटिव देता है। इस टेस्ट को हम यूज करते हैं दो तरह से, क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए भी और क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए। क्वालिटेटिव टेस्ट मीन्स जस्ट टू पता लगाने के लिए कि प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं और नहीं है। और क्वांटिटेटिव जहां हम मेजर करते हैं एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, फिक्स प्रेजेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स। तो इसकी जो लीनियरिटी है इस टेस्ट की वो होती है 5 से लेकर के 150 mg/ml तक की हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट कोई भी सिंगल एमिनो एसिड्स नॉर्मली नहीं देता है। सो इट इज नॉट गिवन बाय एनी ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स अलोन। जब दो अल्फा एमिनो एसिड्स ज्वाइन हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तभी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं देते हैं। सिर्फ एक एमिनो एसिड्स है जो वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जो है हिस्टिडीन। सो हिस्टिडीन इज द ओनली एमिनो एसिड व्हिच गिव्स यू पॉजिटिव बायूरेट। What you do it? अब बायूरेट क्या होता है? नॉर्मली ये हमारा एक यूरिया कंपाउंड। Raja Davud, what happened? Raja Davud. Davud. Yes, sir. What happened? Sir, nothing. Okay, Davud. From your side, you must to send us in the next practicum class wonderful picture of this scheme of Biruet test. I think you very like to make some sketch. It's task for you. You must send me in the next practicum class sketch about Biruet test, how this test passed, okay? And we will see in all of us, we will see how you wonderful make the sketch, okay? Davud, are you hearing me? Okay. Okay, please. Thank you. Excuse me, sir. Yes, tell me. Sir, Iman Fatma and Fatma Guldar just joined the class. Please mark him present. Okay.
let's after this video we will I will check who Okay, sir. joined Thank you. us. Okay, Thank you, sir. okay, thank you. और अगर नाम से आप देखेंगे तो नाम से सजेस्ट होता है इसे बाय मीन्स दो, यूरिएट मीन्स यूरिया, यूरिएट कम्स फ्रॉम द यूरिया। तो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। दो यूरिया मॉलिक्यूल्स को जब हम डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो दोनों कंडेंस जुड़ जाते हैं विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया। यहाँ से H और NH2 निकल जाते हैं, तो एक बनता है NH2CONH2, ये मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं बायूरेट। स्ट्रक्चर ऑफ बायूरेट का अगर आप देखेंगे तो हमने जो पेप्टाइड बॉन्ड देखा था जहाँ CONH2 का पेप्टाइड बॉन्ड था, तो ये स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली सिमिलर होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। तो इसीलिए बायूरेट का बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड्स की तरह ही रिएक्शंस होते हैं। ये हमारा पेप्टाइड्स है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पोर्शंस और ये पोर्शन ऑफ बायूरेट इज एग्जैक्टली सेम। जहां भी CONH के बीच का बॉन्ड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है। तो सिमिलरली ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है बायूरेट के। तो बहुत सारे रिएक्शन बायूरेट जो देते हैं वो हमारे पेप्टाइड्स वाले रिएक्शंस ही होते हैं। बायोलॉजी टेस्ट के लिए जो हमारी जरूरत होती है, हमें जो चाहिए होता है, सबसे पहले हमें एक टेस्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है। वो टेस्ट सॉल्यूशन प्रोटीन्स का होगा। लैब में, बायोकेमिस्ट्री लैब में नॉर्मली जो प्रोटीन सॉल्यूशन हम बनाते हैं टेस्ट के लिए वो होता है बोवाइन सीरम एल्बुमिन, जिसको हम बोलते हैं BSA। तो BSA का सॉल्यूशन एक चाहिए हमें। फिर चाहिए हमें बायूरेट रिएजेंट। रिएजेंट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें होता है कॉपर+2 सल्फेट, ये नॉर्मली पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में होता है, 5H2 इसके साथ होते हैं। दूसरा होता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, इसको हम कॉमन फॉर्म में एलएम भी बोलते हैं या फिर रॉकेट सॉल्ट भी बोलते हैं। तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कली होता है। चौथा पोटेशियम आयोडाइड। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायूरेट रिएजेंट के। हम आगे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं और क्या क्या कितनी कंपोजिशन क्या होती है। फिर हमें चाहिए डिस्टिल वाटर। वाटर बाथ की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं 37 डिग्री के लिए, अदरवाइज नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ड्राई टेस्ट ट्यूब और पाइपेट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे बायूरेट रिएजेंट बनाते क्या हैं। तो रिएजेंट का कंपोजिशन क्या क्या है। तो हमें कॉपर सल्फेट चाहिए जो पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है 1.5 ग्राम। देन हमें चाहिए रॉकेल साल्ट, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट 6 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 1 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन चाहिए 300 ml, एंड फाइनल वॉल्यूम हम करेंगे वाटर के साथ जो 1 लीटर का होगा। सो ये सारे कंपोजिशन जो है वो 1 लीटर के लिए है। अब इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने यूज किया, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम टाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस चारों के अपनी सिग्निफिकेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट में भी कॉपर+2 आयन जो नॉर्मली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। पेप्टाइड बॉन्ड में भी स्पेशली नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड बनाता है कॉपर के साथ। दूसरा NaOH जो होता है वो रिएक्शंस की कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाता है, बिकॉज रिएक्शन जो होगा वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही होगा। तो NaOH का काम है अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। रॉकेल साल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो है वो चिलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे और भी टेस्ट में हमने देखा है, जहाँ बेनेडिक्ट टेस्ट में हमने देखा है, फेलिंग टेस्ट में देखा, जहाँ चिलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं। तो ये चिलेटिंग एजेंट जैसे यूज करता है और ये स्टेबलाइज करता है कॉपर+2 आयन को। चौथा पोटेशियम आयोडाइड जो ऑप्शनल सम कंपोनेंट्स है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास लैब में नहीं है तो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसका काम होता है ये कॉपर के रिडक्शन को इनहिबिट करता है। रिडक्शन मीन्स कॉपर+2 से कॉपर+1 बनने को रोकता है। तो अगर हम पोटेशियम आयोडाइड नहीं यूज करते हैं तो ये इजिली कन्वर्ट होंगे, रिडक्शन हो जाएंगे। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं तो रिडक्शन को स्टॉप करेगा। ये इसकी सिग्निफिकेंस है, चारों कंपोनेंट जो हम बायूरेट रिएजेंट में यूज करते हैं। अब इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। तो नॉर्मली बायूरेट रिएजेंट में हम जो कॉपर सल्फेट यूज करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे यूज होता है, बेस जैसे यूज होता है। ये कॉपर प्लस सल्फेट मीन्स कॉपर+2 रिएक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड में भी नाइट्रोजन के साथ, इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट एक कंपाउंड बनाता है वायलेट कलर का, जिसको हम बोलते हैं बायूरेट कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू होता है। अगर आपके पास आपके टेस्ट सॉल्यूशन में प्रोटीन्स पेप्टाइड्स बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो वो ब्लू कलर से कन्वर्ट हो जाएंगे वायलेट कलर में, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस बायूरेट कॉम्प्लेक्स। अगर
पेप्टाइड बॉन्ड एब्सेंट है तो रिएक्शन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा वायलेट कलर में। कलर की इंटेंसिटी जो होती है इस वायलेट कलर की वो डिपेंड करता है कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। अगर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर कलर कम होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स कम होंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस। NaOH के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, ये एनवायरनमेंट को एल्कलाइन करता है। चार नाइट्रोजन बॉन्ड्स, चार नाइट्रोजन चाहिए होता है, चार अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड से, जो कॉपर +2 के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। हम देखते हैं आगे कैसे बनाते हैं ये चारों रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायूरेट कैसे रिएक्ट करता है। तो ये यूरिया है, जब हम यूरिया को गर्म करते हैं 180 डिग्री पे तो ये हमें अमोनिया को निकाल करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं बायूरेट। ये बायूरेट, 4 मॉलिक्यूल ऑफ बायूरेट का ये नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर होता है वो रिएक्ट करता है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ कॉपर। तो दिस इज वन बायूरेट, दिस इज अनदर बायूरेट, दिस इज थर्ड बायूरेट एंड दिस इज फोर्थ बायूरेट। तो हर एक बायूरेट का ये जो नाइट्रोजन है ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है जिसका कलर होता है वायलेट। तो कॉपर +2 जो ब्लू कलर का था वो उसका कलर हो जाता है वायलेट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिमिलर रिएक्शंस, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस जो होता है वो पेप्टाइड्स भी देता है। ये हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये डाइपेप्टाइड है जिसमें 2 अमीनो एसिड हमने ज्वाइन किया हुआ है। बट नॉर्मली आप हमने लिखा हुआ समझो कि ये चेन लंबा है। तो जब पेप्टाइड्स रिएक्ट करते हैं ब्लू कलर के कॉपर +2 आयन से इन अल्कलाइन कंडीशंस, तो पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उस लोन पेयर के कारण ये नाइट्रोजन इस कॉपर के साथ +2 के साथ पेप्टाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और बनाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर होता है डीप पर्पल और वायलेट। अगर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड है तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वायलेट कलर मिलेगा। अगर ये पेप्टाइड नहीं प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा और वायलेट कलर नहीं बनेगा। तो कलर वायलेट कलर बनने से हमें पता चलता है कि पेप्टाइड्स हैं या नहीं है। रिएक्शन करेंगे कैसे, तरीका क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है। पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये टेस्ट ट्यूब साफ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। एक में हम टेस्ट सॉल्यूशन डालेंगे, दूसरे में हम कंट्रोल डालेंगे, एग एल्बुमिन डालेंगे, एग एल्बुमिन कहने का मतलब कि प्रोटीन डालेंगे। तीसरे में हम डिस्टिल वाटर डालेंगे। सभी में हमने 1 से 2 ml ये सब रिएजेंट डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, आइदर टेस्ट सॉल्यूशन का या एग एल्बुमिन का या वाटर का। सभी टेस्ट में हम 1 से 2 ml बायूरेट रिएजेंट डालेंगे, सबको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम आइदर वाटर बाथ में 37 पे डालेंगे या फिर रूम टेम्परेचर पे डालेंगे और उसके बाद हम कलर को ऑब्जर्व करेंगे, कलर फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो दिस इज द नॉर्मल कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर +2। ये ब्लू कलर कॉपर +2 आयन का होता है। अगर पेप्टाइड प्रेजेंट था इन द टेस्ट सॉल्यूशन तो वो कलर चेंज होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और जिसके कारण ये वायलेट कलर का सॉल्यूशन हमें दिखेगा। अगर ये कलर कन्वर्ट होता है इट मींस पेप्टाइड बॉन्ड वाज प्रेजेंट देयर। अगर ये नहीं कन्वर्ट होता है, ये कलर रिटेन होता है, इट मींस पेप्टाइड वाज एब्सेंट देयर। अब इस रिएक्शन के लिए कुछ चीजें हमें याद करनी चाहिए, देखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। जैसे एडवांटेजेस जो इस मेथड का है कि इसकी टर्न अराउंड टाइम जो है वो बहुत कम होती है, रिएक्शन फास्ट होता है, 5 मिनट में आपको पॉजिटिव पता चल जाएगा। इसके बाद डिसएडवांटेजेस जो इस टेस्ट की है वो है इसकी लो सेंसिटिविटी, और अगर आपके रिएजेंट में अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है किसी तरह से एज ए इम्प्योरिटी, इट विल अफेक्ट योर रिजल्ट, इट विल इंटरफेयर विद द कलर फॉर्मेशन। तो वो आपको एक ड्रॉबैक है। तीसरा, मिनिमम 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए होता है रिएक्शंस के लिए। एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो मिनिमम 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, जो आपने यहाँ देखा है कि मिनिमम हमको एक पेप्टाइड चाहिए जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होने चाहिए। अगर आपके पास एक ही पेप्टाइड बॉन्ड वाला डाइपेप्टाइड कंपोनेंट्स है तो वहाँ रिएक्शंस नेगेटिव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपने अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। Attendance, recheck attendance, I think. Okay.
For example, who was added? Tak. Sir, Iman Fatma and Fatma Gulzar. Gulzar present? Yes, Gulzar, are you here? Yes, Gulzar. sir. Okay. And Iman, Fatima, or who? Yes, sir, present. Okay. Javed Hassan, are you here? No, sir, these two guys are absent. Not. Okay, I think for today enough. Any questions? No, sir. No, sir, thank you. I think for today we will finalize and see you in the next practical class. Okay? Okay, Have a- Okay, sir.